So I'm explaining you on 2D paper, that thing. So yes, beta, someone is calling. Anyone joined late, beta? Anyone joined late? किसी ने लेट ज्वाइन किया हो तो बता दो बेटा. Okay. I'm explaining you the concept, beta. See, this is a line. This line is known as fixed line, beta. And one line I'm taking this. Fixed line and a line which is at an angle of alpha. I'm writing the name of this line is M, right? Now the fixed line, this is a fixed line, beta. This line is fixed, and fixed line is known as always axis. And this is a line making an angle alpha. This line is known as generator. Generator means we have to keep this line fixed and we have to revolve this line around the fixed line in such a way that this angle alpha remains constant. ये alpha angle change नहीं होना चाहिए. In this way we have to rotate this way, beta. Suppose I'm taking another line. This is a fixed line, beta. This black pen and this red is your generator. Now we have to ये fixed point के around this fixed point, and angle should remain same, beta. Angle between these two, red pen and black pen, should remains constant and we have to move this way, beta. इस तरीके से इसके around मुझे घुमाना है, right? We have to rotate this like this way. So what kind of figure we will get, beta? We will get this figure, beta. This type of figure we will get double napped cone. It is better if I'll make this in this way. This is known as double napped cone, and this is your that fixed line. This is your fixed line, beta, and this is the that generator line. This is your generator line, which is known as M, and this is L, and this is that angle alpha. ये वाला angle, beta. This is the angle alpha, and we have to keep this angle alpha remains same, constant, and we have to revolve this generator line so that this angle remains same, and we will get this double napped cone. This is known as double napped cone. Double napped cone. This intersection point of generator and a fixed line is known as vertex. This point, intersection of generator and a fixed line, is known as vertex. Right, beta? Now, we know that
if either we have a straight line this way beta, this way, these are straight line. If a line is not straight, अगर कोई लाइन स्ट्रेट नहीं है तो वो क्या होगा बेटा, वो कर्व होगा, कोई ना कोई कर्व होगा बेटा. एंड वी हैव सम स्टैंडर्ड कर्व्स which are not straight line. Then after we have some standard curves. And how we got this curves beta? By using So what this is G? procedure. Beta, what is G is known G. as generator. Generator को नाम G दिया है बेटा मैंने, generator. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा, yes, please. Sir, please mark my attendance. Bhavya Bharadwaj आएगा. Bhavya. Anyone else beta? One second. Bhavya Bharadwaj, Siddharth Jain. Anyone else? Sir, Galaxy. One second. Galaxy. Who's this? Srishti. Okay. Srishti. Done, beta, done. Anyone else? Okay. Till here, is this clear, beta? Generator, axis, vertex. Is this clear to all of you, beta? So what is a standard curve? Yes, sir. Standard curves we have, beta. Standard curve first is circle. Second is then parabola. We have standard curve. Then next is ellipse. And next is hyperbola. Till 12th, we are learning only these specific standard curve. We have more than these four also, beta. But in till class 12th, we are learning only these four topics. We understand Why are these these four. standard curves? Sorry? Why are these called standard curves? Standard, because if we intersect this double nap cone in specific situation, we will get these specific curves. That's why these are known as standard curves. एक specific shape देंगे. That's why these are standard. And for these we have standard equation, standard relation between the arbitrary points. That's why these are known as standard curves. Sir, 11th syllabus में सारे curves हैं. Yes, ये all four curve we have beta. And these four also in class 12th also. Use of these four. बोलो clear है बेटा यहाँ तक? Yes. बोलो बेटा. Right. Now, after this is the basic. We have reached to how to make this double napped cone. So we have made this double napped cone by rotating this generator line along the fixed line in such a way that the angle alpha remains constant. ये alpha angle आपका change नहीं होना चाहिए बेटा. ठीक है? In this way we have to rotate this. इसके चारों तरफ इस तरीके से rotate करना है. We will get this shape बेटा. Right? After this, now we insert. I'm taking again this double napped cone. Sir, they have to be equal double nap cones. हाँ, सेम बेटा. वो बनेंगे अपने आप बेटा. जब आप से अल्फा एंगल पे इसको रोटेट करोगे तो वो हमेशा ही बिल्कुल सिमेट्रिकल बनेंगे बेटा. This is your. Sir, vertex should be in the middle of axis ना, तभी बनेंगे. हाँ जी, this one. इस जगह पे बेटा. थोड़ा डायग्रामेटिकली मेरा वैसे हो सकता है, अदरवाइज मिडल में ही आप करोगे तो शेप में मिडल के हिसाब से ही चलोगे आप बेटा. थोड़ा सा इसको स्ट्रेट ले लेता हूं. This is your generator line. Now, M and this is L. This you know that this is your vertex, which is denoted by capital V. This point is vertex. Right? Now,
we have to insert a plane. We have to intersect this double napped cone with a plane. Plane means सपोज करो ये एक शेप है और उसको मैं किसी एक प्लेन से कट करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ या कट कर दिया, इस पोर्शन को मैंने कट कर दिया, राइट. नाउ इन डिफरेंट एंगल्स वी हैव दिस इज एंगल अल्फा. थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ डायग्राम, पता नहीं ये दिखेगा नहीं दिखेगा. थोड़ा सा रफ चलता हूँ बेटा मैं. This angle is alpha, right. Now I am intersecting a line, मतलब intersecting a plane in between the double napped cone, either in the upper one or in the lower one. This known as upper nap and the lower one is known as lower nap, right beta. Now if we insert a plane in such a way that the angle alpha and the angle of this plane is same. It's Suppose called upper map. upper nap beta, upper nap. This is known as upper, right, and this one is known as lower. ठीक है बेटा. Is Yes, this sir. clear now? Right. Now I'm inserting a plane. Any 2D, any paper, any sheet. Suppose I have this sheet. This is a sheet, 2D sheet beta. This is a plane, and I am inserting in this cone. इस cone के अंदर insert करना है मुझे. So मैं इस scale को एक plane मान रहा हूँ, and I am inserting in this in such a way that angle alpha and beta. Angle alpha means angle of generator and axis alpha and angle of this plane both are equal. If first case is if angle alpha is equal to beta. Beta is angle made by the plane. Beta is the angle made by the plane with axis. Remember this thing beta. This is the important point. Beta is the angle made by the plane. Plane means ये जो plane मैंने लिया है आपका स्केल को, ये एक एंगल आपका बना रहा है बीटा. दिस बीटा एंड अल्फा. अगर इफ अल्फा इज 30 देन बीटा शुड बी 30. देन द ये डायग्राम. प्लेन इमेजिनरी है फिर रियल? क्या बेटा, क्या दोबारा बोलो. ये प्लेन हम इमेजिनरी है? नहीं नहीं बेटा, रियल. मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हो, अगर मैंने इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया है कोन को, इस शेप को, तो आपको बाद में किस नाइफ से जो कट कर रहे हो इस एंगल पे सच दैट अल्फा एंड बीटा आर इक्वल, तो वट एवर द शेप वी आर लेफ्ट विद, देखो ये शेप बचेगी, दिस शेप. जो डायग्राम में ये शेप बचेगी बेटा, दिस इज द शेप वी आर लेफ्ट विद. दिस शेप इज नोन एज पैराबोला बेटा. यानी कि अब आपका क्वेश्चन बनता है, इफ वी इंटरसेक्ट द डबल नैप्ड कोन with the plane at an angle of beta, where alpha and beta are same, and you know that alpha is the angle between generator and axis, and if the plane we inserted is making the same angle, then it means this will provide conic parabola. अब ये पैराबोला बनाएगा बेटा. In this situation, this will make a parabola. Is this clear बेटा? देखो Yes. मैं Yes, sir. 2D पे 3D की चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. That's why I've given you that video बेटा, जिससे कि आप उसको इमेजिन कर सको. ठीक है, या फिर हम किसी कोई एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही इसको समझ सकते हैं. प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमने ये कोन बनाया, देन इन डिफरेंट सिचुएशन वी कट, वी इंसर्ट, वी
make an these kind of conic in different angles. So if whenever angle alpha and beta are same, the conic we will get is parabola. Now second case, if beta is perpendicular, यानी beta is 90 degree, अगर आपका एंगल 90 डिग्री है with the axis, अब इसको समझना कैसे बेटा, देखो again I'm taking this is angle alpha. Now I am inserting a plane will for making an angle beta and that is 90 degree. अगर 90 में बनाता हूं तो what shape I am getting? If beta is equal to 90 degree, this implies we will get circle. अगर इसी के पैरेलल, मैंने इस शेप के ही परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर मैंने इंसर्ट किया, तो विल गेट अ सेम शेप बेटा. ये जो सर्कुलर शेप है, हाँ जी बेटा, someone is saying, any doubt here बेटा? No, sir. Okay. See, if we insert the same plane, this plane beta, angle made by this plane with the axis, if 90 degree, then we will get conic circle beta, right? In different angles. So they will ask you, if angle alpha is equal to beta, what conic we will get beta? So you have to tell the answer parabola. And this is understood that alpha is the angle. This we have to keep in our mind, that angle alpha is the angle made by the generator with the fixed line, and that fixed line is axis. Fixed line is always known as axis of that shape. जिस shape की भी हम बात कर रहे हैं उसका वो axis हो जाएगा बेटा. Right बेटा? So we have reached to two conics. Now the third one is, हाँ जी बेटा. सर ये सर्कल बनेगा कैसे, मतलब हम सर्कल इसमें रेडियस किसको लेंगे? बेटा रेडियस की बात अभी हम आएंगे. सर्कल अभी तो हमने देखा ही सर्कुलर है. सर्कुलर का मतलब क्या होता है? सेंटर से सर्कल पे जितने भी पॉइंट होते हैं, दोज आर फिक्स. अगर हम इस काटेंगे वो सर्कुलर प्लेन होगा, ये कहने कहने का नहीं, प्लेन सर्कुलर नहीं होगा बेटा, आप समझे नहीं बेटा. अगर अब मैं इसको, चलो मैं एक बार ये वाला कोण लेता हूँ, देखो नॉर्मल कोण, राइट. नाउ अगर मैं अब इसको यहां से कट कर देता हूं, इस जगह से कट कर देता हूं, कट समझ रहे हो? कट मतलब मैंने एक नाइफ से इसको कट कर दिया, तो कट करने के बाद जो लोअर पोर्शन है वो भी तो ऐसे ही बचेगा बेटा, यही तो शेप बनाएगा. कोन का जो बेस होता है, कोन का जो बेस होता है बेटा, ये बताओ पहले, कोन का बेस क्या होता है? सर्कुलर होता है, ये तो पता है ना, बोलो. यस सर. ठीक है. अगर कोन का बेस सेम होता है और ये इसका फिक्स्ड लाइन है बेटा, और मैंने एक इंसर्ट किया इसके हिसाब से परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री के हिसाब से मैंने इसको कट किया, तो जो इस जगह पे इस कट करने के बाद ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा, ये पोर्शन अलग हो जाएगा. तो जो ये शेप है, इफ इट इज ए सर्कुलर देन इट इज आल्सो ए सर्कल. आप जो पूछ रहे हो कि इसका रेडियस कम ज्यादा हो जाएगा, दैट इज लॉजिकल बनता है सर. मैं वो पूछ रहा था कि मुझे लगा कि हम कि जिस प्लेन में अगर हम काटेंगे इसे तो यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, मतलब मैं वो पूछ रहा था कि तो उसका रेडियस. यस, मैं वही कह रहा हूँ. अगर प्लेन को मैं 90 डिग्री पे रख के इस फिक्स लाइन के साथ कट करता हूं, तो जो शेप आएगी दैट इज सर्कुलर, ये मैं बता रहा हूं. ठीक है. एक बार फिर से इसको समझने के बाद बेटा वो वीडियो देखना, आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी. ठीक है. और सर जैसे वो ऊपर वाला था उसमें पैराबोलिक बनेगी. हाँ, ये पैराबोलिक शेप बनेगी. आफ्टर डिटैचिंग द कट पार्ट सेपरेटली, द पिक्चर और द शेप वी आर एबल टू सी दैट इज पैराबोलिक बेटा. ठीक है.
ओके सर। चलिए अब हमारे पास आगे दो कर्व। नाउ द थर्ड वन कैसे आएगा देखो। सर बीटा हमारे प्लेन और जनरेटर के बीच का एंगल है। बीटा इज द एंगल मेड बाय एक्सिस एंड द प्लेन जो वी आर इंसर्टिंग। बीटा जो एंगल होगा वो हमारा एंगल होगा जेनरेटर के साथ, तो बेटा वो है अल्फा एंगल है। फाइन सर। राइट, एंड दिस is your axis, this is your generator, this angle we know that alpha. Right, now the next case is third case. Beta should greater than alpha. Now we insert a plane in such a way that that beta yani the angle made by the plane with the axis of this, and that is also less than 90, more than beta but less than 90। ये नहीं कि आप 91 डिग्री का एंगल बना दो, तब नहीं बेटा। अब यहां देखना, इफ दिस इज अ 30 डिग्री, आई एम इंसर्टिंग, अब मैं थोड़ा सा अलग करूंगा इसे, दिस, नाउ इंसर्टिंग दिस प्लेन and this angle clearly visible, beta is more than alpha. If this alpha is 30, if it is 31, then also we'll get the conic ellipse, which is not circular. Ellipse means elliptical, egg shape जिसे बोलते हैं, right बेटा? Ellipse, उसका नाम होगा ellipse. Yes, sir. Now fourth one बेटा, the fourth one. If अगर हम बीटा एंगल को अल्फा से कम कर दें, if beta is less than alpha, right, but more than zero, so now next shape is, see, तब दूसरी साइड एलिप्स बन जाएगा बस। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है बेटा। अभी देखो, जब मैं एक प्लेन को इस तरह से इंसर्ट करता हूं तो सिर्फ एक नैप को कट कर रहा है, हर केस में देखो एक ही नैप को कट कर रहा है। बट इफ वी टेक एंगल यानी प्लेन को इस तरीके से इंसर्ट करेंगे जिससे कि बीटा जो एंगल है दैट इज लेस देन अल्फा, इट मींस अगर देखो ये 30 डिग्री है तो 29 या 25 लूंगा, तो आप जो कटिंग है वो इस तरीके से होगी जिससे कि ये आपके दोनों नैप कट हो जाएंगे, दोनों नैप कट हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, देखो एक्चुअली स्कूल में स्मार्ट लैब है ना, उसमें वो मॉड्यूल है जिसमें मैं आपको 3D पिक्चर्स आपको शो करके समझा सकता हूँ। नाउ this is your axis, generator, and we know that this is angle alpha. अगर अल्फा 30 है तो मुझे इस तरीके से कट करना है कि आपका एंगल 30 से भी कम हो। सपोज करो मैंने ये ले लिया, ये कट किया, तो आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल इस अल्फा से कम है। अगर ये 30 है तो आपको शेप से ही दिख रहा होगा इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है और इन दो लाइनों के बीच में कितना डिफरेंस है। राइट बेटा? यस सर। Sir. ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये दो शेप देखो, यहाँ पे भी ऐसा कोई शेप बनाएगा एंड सेम हियर एट दिस प्लेस बेटा, तो दो तरीके की शेप बनाएगा और एक ही इस पे, इधर भी आपका ये शेप बना रहा है, इधर भी ये शेप बना रहा है, इसको हम बोलते हैं बेटा हाइपरबोला। नेमिंग की हुई है बेटा, जिस मैथमेटिशियन ने इन पे काम किया उसके दिमाग में जो जो वर्ड आया उसने वो नाम दे दिया। ये एलिप्स दे दिया, एलिप्स मींस जो सर्कुलर नहीं है लेकिन लगती कुछ सर्कल जैसी है, दैट इज नोन एज एलिप्टिकल। ठीक है बेटा, these are the different situation at which we are getting these standard curves बेटा। So in सर first, हाइपरबोला के कर्व्स क्या अलग, मतलब नहीं डिफरेंट? इन दोनों, ना इन दोनों शेप को ही, दोनों को साथ, ये दोनों एक जैसी शेप बनाएंगे। These two are symmetrical।
अबाउट दिस एक्सिस, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमने एक ही प्लेन से कट करके बनाया है इस तरीके से करके, ठीक है ना, एक ही प्लेन लिया, अलग अलग नहीं कि पहले मैंने ऊपर वाले को कट किया फिर दूसरे को, तो थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, अदरवाइज ये सेम आएगा बेटा, ये सिमेट्रिकल होगा, इसके और इसके बीच में यहाँ पे सेम डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये जो जितना ओपन होगा उतना ही ओपन ये होगा, दैट इज नोन एज सिमेट्रिकल। तो फिगर्स आर सिमेट्रिकल बेटा, ये दोनों शेप आपकी सिमेट्रिकल होगी, ठीक है बेटा, इज दिस क्लियर बेटा, यहां तक बताओ पहले, क्लियर है नहीं क्लियर है बेटा? देखो थोड़ा सा जितना मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ना, प्लीज सी अगेन दैट वीडियो विच आई हैव शेयर्ड लास्ट नाइट बेटा, लास्ट डे बेटा, एक बार देखना और क्लियर होगा। मैं आपके संग इतना क्यों डीप डेप्थ में जा रहा हूँ, आई विल नॉट डिस्कस दीज थिंग विद द कॉमर्स स्टूडेंट बेटा, आई नो दैट दे आर, मतलब उनको जो इजी चीज भी लग रही है वो डिफिकल्ट लगेगी इतना डेप्थ में जाने के बाद, वो इतना इमेजिन नहीं कर पाते कि प्लेन को 90 डिग्री कैसे बना, मतलब रेयर केसेस आर देयर आल्सो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सबके लिए पॉसिबिलिटी नहीं, आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो बेस हॉट्स होते हैं, दैट यू आर एबल टू सॉल्व यूजिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा, इतना डिस्कस नहीं करते हम कॉमर्स वालों के साथ, उनके संग सीधा सीधा पॉइंट पे पहुंचते हैं। चलिए, नाउ द फर्स्ट टॉपिक यानी फर्स्ट कोनिक जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, दैट इज सर्कल, दैट इज सर्कल बेटा। सर्कल क्या होता है देखो, सर्कल इज, दिस इज अ सर्कल, there is a fixed point, right, and we have set of points, set of points which are at equidistant with the fixed point, these are these distances are equal, equidistant means these are equal distances, ठीक है, and this distance is known as radius, and this fixed point is known as center, and the set of points is known as arbitrary point, and whatever the relation we will get with this fixed point of this arbitrary point, that is the equation of circle beta. Now the definition of this circle is what? The set of all points, the set of all points in a plane that are equidistant to a fixed point, that are equidistant to a fixed point in the same plane, in the same plane, this is known as, this is known as circle. Here the first thing is fixed point is known as center, right बेटा, उसको हम center बोलेंगे, and the distance of a point, of a point, one of the point, one of the distance of one of the point from the fixed point is known as radius, radius, right beta, so we have two, but have you written after distance of? क्या बेटा, sorry, आपने distance of के बाद क्या लिखा है? distance of one of the point, one of the point out of the set of point beta, we have so many points which are equidistant from a fixed point, and that fixed जो equidistant है, equal distances are known as the radius, that I am talking, ठीक है बेटा? Okay sir. Now अब मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, तो सपोज करो, अब मैं इस एग्जांपल से ही ले रहा हूं, दिस पॉइंट, फिक्स पॉइंट इन 2D plane, it is h, k, and taking a
random point, that is known as arbitrary point x, y. And we know that this distance is r. So using this concept, distance formula, r is equal to root of cp का मतलब हो गया, r is your cp beta. So cp is x minus h square plus y minus k whole square. Distance formula beta, x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square. Squaring both sides, so you will have r square equal to x minus h whole square, y minus k whole square. This is the equation of circle. This is equation Where of, is center kept at origin? नहीं अभी हमने एक रैंडम लिया बेटा. देखो ये मेरा 2D प्लेन है, ये रहा मेरा 2D प्लेन, ये टच हो गया, सॉरी इस लाइन को हटा दो, ये है बेटा. अभी मैंने इस जगह पे लिया है. दिस इज x, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x डैश एंड दिस इज y डैश. अभी मैंने सेंटर यहाँ लिया है, विच इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, एनी पॉइंट 2 3 4 5 कुछ भी. आप जो बोल रहे हो ओरिजिन, नाउ वी विल रीच टू द स्पेसिफिक सिचुएशंस वन बाय वन. So this is the standard form of a equation of circle. Equation of circle का standard form है ये बेटा. Now writing standard equation of circle is x minus h whole square, y minus k whole square is equal to r square. Where center is h comma k. Right बेटा, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है दैट इज h comma k. Radius is denoted by r and x y arbitrary points, arbitrary points, that is x y. Arbitrary point मतलब जो इस सर्कल के बाउंड्री पे जो पॉइंट होते हैं दैट इज नोन एज आर्बिट्री पॉइंट. जो फिक्स होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा था बेटा, ax plus by plus c. So this x and y are the arbitrary point on that line. ठीक है बेटा. So this is the standard equation of circle. This is the standard equation of circle. अब मैं आपकी बात पे आता हूं. देखो सपोज अब मैं वन बाय वन लेता हूं. फर्स्ट इज सर्कल हेयर, जिसके सेंटर मैंने लिए थे h comma k, and equation of this is x minus h square plus y minus k square is equal to r square. If center lies in first quadrant, now what if center lies in second quadrant? सेंटर के पॉइंट बताओ बेटा मुझे क्या होंगे, बोलो. माइनस h comma k. Here x coordinate is negative, y coordinate is positive. So in this situation, equation of circle will be x plus h square plus y minus k whole square is equal to r square. This is the equation of circle when center lies in second quadrant. Now third one, when center lies in third quadrant. Here minus h minus k. Then equation of circle is x plus h whole square, y plus k whole square is equal to r square. Right beta? Is this clear beta? Now if center lies in fourth quadrant, so what are the coordinate of center? X coordinate positive and y coordinate negative. So now equation of circle is x minus h whole square plus y plus k whole square equal to r. Sorry. Is this clear beta? All the four quadrant circle Yes. is clear to all of you? Right. Now the next is if center lies on origin. It means coordinate of x and y is 0. Right beta? So मैं h और k की जगह 0 पुट करना है, तो x square plus y square, equation of this circle is
x square plus y square equal to r square. This is the equation of circle whose center lies on the origin. ठीक है बेटा, बोलो भाई. All the exceptional cases are clear or not beta? These are equation of circle. If somebody asks you what is the standard form of equation of circle, that is this one. After that we have taken all in the respective quadrant. Is this clear or not? पहले ये बताओ बेटा. All 5 circles are clear or not? Yes, sir. Yes, sir. हाँ Sir, बेटा I बोलो. have a doubt. Yes बेटा बोलो please. Sir, मतलब एक circle is a type of an ellipse is a type of circle, no? बेटा ellipse is a specific case of circle. Yes, sir, You a specific case of कुछ भी circle. होता है तो उसमें. हमें वो इसी किसी कोऑर्डिनेट में मिल सकता है ना? नहीं 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 बेटा नहीं. देखो आप समझे नहीं बेटा. एलिप्स की ये डेफिनेशन नहीं है. मैंने फर्स्ट लाइन यहाँ पे बोली है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. ये जितने भी इसकी बाउंड्री पे इनफाइनाइटली पॉइंट वी हैव बेटा, इन सब का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से जब आप लोगे तो सबका डिस्टेंस सेम आएगा. देन ओनली वी कैन हैव अ सर्कल. इलिप्स में ऐसा नहीं होगा बेटा. इलिप्स की डेफिनेशन डिफरेंट आएगी. अभी आप समझना. ओके सर. हाँ कुछ बच्चा और बोल रहा है, कुछ बोलो बेटा. किसी का कुछ और डाउट था या कुछ एक्सप्लेन कर रहा था वो बच्चा. लक्ष्य आप कुछ बोल रहे थे बेटा, बोलना. सर बेसिकली जो आपने जो 5 सर्कल जो बनाया सर, बेसिकली उसमें हम डिफरेंट फॉर्मूला लगाएंगे ना? नहीं बेटा, आपको सिर्फ क्या करना है, एच और के है. अगर मैंने कहीं पे लिख दिया -2,3, तो यू हैव टू रिप्लेस एच बाई -2 एंड के बाई 3 ओनली. तो इफ यू रिप्लेस एच बाई -2, तो दिस बिकम एक्स, माइनस ऑफ -2 बिकम एक्स प्लस. हो गया बेटा ये वाला क्वाड्रेंट. बिकॉज यू आर सीइंग दिस -2,3 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. तो या तो ये क्रैम कर लो या आप इसको याद रखो, एंड एच एंड के यू हैव टू रिप्लेस बाय दीज पॉइंट्स. तो अपने आप प्लस माइनस अपने आप एडजस्ट कर लेंगे. ठीक है. हमें बेसिकली दिस फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर फॉर एवर, एंड दिस इज द अंडरस्टैंडिंग. इफ समवन आस्क्स यू इफ center is minus h comma k, then what will be the equation of circle? You have to write this one, and that is coming from using this formula only. If we replace this h by minus h, so minus of minus h become plus beta. So x plus h whole square, and this become y minus k whole square. If both h and k are negative, so this become positive. So I have written here positive. ठीक है बेटा. Yes, sir. अब ये 5 है. अब next देखो बेटा, after these 5 बेटा. Oh sorry, this is 5th and this is. There are some more also. Suppose, now what if center lies on x-axis? What is the equation of circle if center lies on x-axis? एक 2 मिनट और लूंगा बेटा बस आपके, फिर मैं क्लास ओवर कर दूंगा. Yes बेटा please. What are the H. coordinate of this? 0. H comma 0. Very good. Now what will be the equation of this circle? X minus h whole square plus y minus 0 square equal to r square. Right? And what if it is here? It is minus h comma 0. So equation of this circle is x plus h whole square plus y square equal to r square. Right? Now what is the equation if circle center lies on y-axis? Now coordinate is 0 comma k. So it is x square y minus k whole square equal to r square. And what if the center lies on negative y-axis? So it is 0 comma minus k. Equation is x square plus y plus k whole square is equal to r square. ठीक है. Now again there are some specific situation. If center lies on x-axis and touching the origin also and passing through the origin also, what is the coordinate of this beta? Tell me. Suppose
this is a comma 0. Now what will be the equation now? Anyone beta? x Can you minus please a whole repeat the square plus question? y square equals to a square. Very good. X minus a square plus y square equal to a square. In this situation, this point, this distance is a. That's why this is a comma 0. And this point is also the radius. तो radius भी आपका a ही है इस केस में. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली फिर विद 4x ये चारों पॉइंटों पे निकालोगे. एंड द नेक्स्ट केस इज व्हाट इफ सर्कल टचिंग x एंड y एक्सिस. अब बताओ बेटा क्या लॉजिक लगेगा. सर्कल जो भी बनेगा ये मेरे सर्कल नहीं लग रहा होगा. व्हाट विल बी द लॉजिक बिहाइंड दिस. एंड दिस इज द क्वेश्चन आल्सो. So radius is equals to x दो coordinate and y रेडियस coordinate. में दो रेडियस की अलग अलग आएगी इक्वेशन. देखो थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ. शायद ये कहीं पे है. 15 आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है ये. चलो अभी आएगा तब बताएंगे. इस वाले पार्ट पे अभी मैं आपसे ही निकलवाऊंगा ये क्या है. अभी इसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं. टाइम हो गया बेटा. एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं. 11.1 2 3 4 4 exercises we have to do better for this chapter. 11.1 2 3 and 4 only. Miscellaneous are not supposed to do in this because of this pandemic syllabus बेटा. ठीक है. सर थर्ड सर्कल में ना अगर x एक्सिस को टच करने वाले पॉइंट देखे तो h स्क्वायर प्लस y प्लस की स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर आएगा. और फिर दूसरे पॉइंट का फिर y कोऑर्डिनेट हट जाएगा, x कोऑर्डिनेट आएगा. हाँ मैं वही कह रहा हूँ बेटा. अभी हम इसको डिस्कस करेंगे. मैंने इसको क्वेश्चन को ले लिया यहाँ पे. एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. या तो ये मेरे वर्कशीट में है या देखूंगा मैं बताऊंगा आपको तब डिस्कस करेंगे इसको. ठीक है, वेट अ सेकंड बेटा. अभी लीव मत करना क्लास. ओके नाउ यू मे लीव बेटा. Thank you, sir. ओके बेटा ओके. सर